नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। बात करने जा रहे हैं ईरान और इजराइल की, जिनके बीच अब युद्ध शुरू हो चुका है। शुक्रवार की सुबह इजराइल ने जिस तरीके से एयरबेस पर हमला किया, एयर स्ट्राइक की, ईरान में घुसकर बहुत तबाही मचाई, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेकिन इसे कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल वॉर, यानी अगर कोई सोच रहा है कि ईरान कमजोर देश है तो वो गलत है। ईरान भी डंके की चोट पर इजराइल में तबाही मचाने के लिए तैयार है और इस बात को एक्सेप्ट करते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। वो इस बात को मानते हैं कि अगर तेहरान में घुसकर इजराइल ने मिसाइलें दागी हैं तो बदले में ईरान भी कुछ ना कुछ अटैक जरूर करेगा। खबर यह मिल रही है कि बीती रात एक बार फिर इजराइल ने ईरान में तबाही मचाई तो बदले में ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल में हमला कर दिया। खबर यह भी मिल रही है कि इजरायली महिला की मौत हुई है। तेल अवीव के पास यह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ जिसमें इस महिला की मौत हुई। ईरान ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी जो उसके परमाणु ठिकानों पर हुई एयर स्ट्राइक के जवाब में थी। आप जानते ही हैं इजराइल ने जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की, ईरान में घुसकर उसके परमाणु ठिकानों को अपना निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि चाहे इजराइल हो या फिर ईरान, आसमान में धुआं धुआं ही देखने को मिला, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि ऑफिशियल तौर पर दोनों के बीच जंग शुरू हो चुकी है। बताते चले, ईरान ने तेल अवीव के आसपास कम से कम 7 जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यह हमला इजराइल के उन जबरदस्त हवाई हमलों के बाद हुआ जिनमें तेहरान के सैन्य नेटवर्क और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया था। ईरान के इस मिसाइल अटैक में इजरायली महिला की मौत हुई है। बाकायदा इजरायली पुलिस की प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि तेल अवीव के पास एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बहरहाल, जिस तरीके से दोनों देशों के दिग्गज नेता हैं वो इस पूरे हमले पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बाकायदा एक बयान सामने आया है जिसमें वो सीधे तौर पर संदेश दे रहे हैं अपनी जनता को। वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई ईरान की इस्लामिक सत्ता से है जो अपने ही लोगों को दबा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ईरानी लोगों से भी अपील की कि वो इस शासन के खिलाफ आवाज उठाएं, आजादी की तरफ कदम बढ़ाएं। हम ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं। यानी बेंजामिन नेतन्याहू एक साथ दो वॉर लड़ रही हैं, एक तो मिसाइलों से और दूसरा लोगों के दिमाग से। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वो ईरान के लोगों से अपील कर रही हैं कि आप इस्लामिक सत्ता के खिलाफ खड़े होइए, इस शासन से आजादी की मांग कीजिए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ आइए। अब देखने वाली बात होगी कि ईरान के लोग ईरान के साथ रहेंगे या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री की बात मानेंगे, क्योंकि वहां पर भी विरोधी लहर तो है, लेकिन इस विरोधी लहर का फायदा बेंजामिन नेतन्याहू को होगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू ने और क्या कुछ कहा है मैं आपको उनके बयान के साथ छोड़कर जा रही हूं। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before. Steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year,
Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. Soon, those missiles could carry a nuclear payload, threatening the lives not of hundreds, but of millions. Iran is gearing up to produce 10,000 of those ballistic missiles within 3 years. Now just imagine 10,000 tons of TNT landing on a country the size of New Jersey. This is an intolerable threat. It too must be stopped. Iran is now working on what it calls the new plan to destroy Israel. You see, the old plan failed. Iran and its proxies tried to encircle Israel with a ring of fire and to attack us with the horrible attack of October 7th. But the people of Israel, the soldiers of Israel, rose like lions to defend our country. We crushed Hamas, we devastated Hezbollah, we hit Iranian proxies in Syria and Yemen. And when Iran directly attacked us twice last year, we struck back inside Iran itself. Yet in defending ourselves, we also defend others. We defend our Arab neighbors. They too have suffered from Iran's campaign of chaos and carnage. Our actions against Iran's proxy Hezbollah led to the establishment of a new government in Lebanon and the collapse of Assad's murderous regime in Syria. The peoples of those two countries now have a chance for a different future, a better future. So too do the brave people of Iran, and I have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. And when that happens, the great friendship between our two ancient peoples will flourish once again. I want to assure the civilized world, we will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons. And Iran plans to give those weapons, nuclear weapons, to its terrorist proxies. That would make the nightmare of nuclear terrorism all too real. The increasing range of Iran's ballistic missiles would bring that nuclear nightmare to the cities of Europe and eventually to America. Remember, Iran calls Israel the small Satan. It calls America the great Satan. And this is why for decades, it's led millions in the chants of death to Israel and death to America. Today, Israel is responding to those genocidal calls with action and with a call of our own. Long live Israel and long live America. Our action will help make the world a much safer place. I want to thank President Trump for his leadership in confronting Iran's nuclear weapons program. He has made clear time and again that Iran cannot have a nuclear enrichment program. Today, it is clear that Iran is just buying for time. It refuses to agree to this basic requirement of peaceful nations. That is why we have no choice but to act, and act now. The hardest decision any leader has to make is to thwart a danger before it is fully materialized. Nearly a century ago, facing the Nazis, a generation of leaders failed to act in time. They were paralyzed by the horrors of World War I. They were determined to avoid war at all costs, and they got the worst war ever. They adopted a policy of appeasement. They closed their eyes and ears to all the warning signs. That failure to act resulted in World War II, the deadliest war in history. It claimed the lives of 60 million, including 6 million Jews, a third of my people. After that war, the Jewish people and the Jewish state vowed, never again. Well, never again is now. Today, Israel has shown that we have learned the lessons of history. When enemies vow to destroy you, believe them. When enemies build weapons of mass death, stop them. As the Bible teaches us, when someone comes to kill you, rise and act first. This is exactly what Israel has done today. We have risen like lions to defend ourselves. Over 3,000 years ago, Moses gave the people of Israel a message that has steeled their resolve ever since. Be strong and courageous, he said. Today, our strong and courageous soldiers and people stand together
to defend ourselves against those who seek our destruction. And by defending ourselves, we defend many others, and we roll back a murderous tyranny. Generations from now, history will record that our generation stood its ground, acted in time, and secured our common future. May God bless Israel. May God bless the forces of civilization everywhere. Thank you.